Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we will be discussing about the GI tax, that is Geographical Indication Tax, as it has been a much demanded session in the last few days. I have seen many students were requesting that, sir, please come up with a session on GI tag. So today I'll be discussing about that. So am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Am I audible and visible? Okay, so let's begin. GI tag, the class on GI tag. Okay, but before that, yesterday I had discussed this class, Global Hunger Index 2024. If you have watched it, it's good. If you have not watched it, go and watch. Recently, the Global Hunger Index has been released, and in the last portion of this class, I had given you homework, and the homework was India's rank in the World Press Freedom Index बताना था और India's rank in World Happiness Index बताना था. In fact, I had told you that you should watch this class जिसमें मैंने डिटेल में सब बताया है the all the important indices that I have already discussed in this class. So India's World Press Freedom Index में India's rank is 159 out of 180 countries. This you should be knowing it. And the next is World Happiness Index mein India has got 126 out of 146 rank. Okay, yes, and yes, many people had answered me correctly. Gautam Maurya, Dev Agarwal, Tanishka, Archana, Pallavi Singh, CLAT Cracker, Charvi Jain, you all were right. Very good, you all had answered me correctly. ठीक है, तो ये वाली आप लाइव वाले सेक्शन में जाना on our YouTube and you can get this video. If you have not watched it, go and watch. So let's begin with today's class, and today's class is all about the GI tag. And I think GI tags are very important. It comes in the news again and again. So that is why we have decided to discuss it in detail. So let's begin with the first question. What is the full form of GI in GI tags? Your options are geographical indication, geography identifier, geomorphological identification, geographical identification. What is the right answer? देखो स्लाइड लिटिल बिट डिफरेंस है. The options are very near to each other, so be careful while answering the question. Yes, I'm expecting you all to answer. Yes, Lavina, Devanshi, Aditya Verma, you all are right. The right answer is geographical indication is the right answer. देखो इसमें और इसमें थोड़ा सा का ही फर्क है. ये geographical identification है और ये geographical indication है. So the right answer is A. ठीक है. Yes, Aditya Verma, you are right. Geographical indication, GI tag means geographical indication tag. Okay, and if you go on the website of WIPO, World Intellectual Property Organization, they have explained also what is a geographical indication. Geographical indication is a sign used on products that have a specific geographical origin and possesses qualities or a reputation that are due to that origin. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि GI टैग नाउ बताता है कि एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट या वॉट एवर इट इज, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है. ठीक है, सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ कॉपीराइट गिवन टू अ रीजन, अ ज्योग्राफिकल रीजन, कि ये चीज ओरिजिनली यहाँ से बिलोंग करती ओरिजिनली, कि दैट इज व्हाट द आइडिया इज कि ओरिजिनली दिस थिंग बिलोंग्स टू दिस प्लेस, यहीं पहले पाया जाता था शुरुआत में और इसके बाद से पूरी दुनिया में यहाँ से फैला है ना. जैसे फॉर एग्जांपल वी से लेट्स टेक एनी एग्जांपल. Okay, let's take an example of khaja. You know this? So I hope those who are from Bihar are aware of it. This is a food, a sort of a food to eat. It's a sweet dish actually. So this is originally from Silao in Bihar. I'm just giving example. I mean, it's very famous there. So this was given a few years back, I would say, GI tag. It means originally this sweet dish belongs to Bihar. That is what it means. And from here, it actually spread to the entire world. So the world should recognize that this was originally from this city. ठीक है, यही concept है GI tag का. Okay. Now, since we are talking about WIPO, कोई बता सकता है, when I was talking about important indices, WIPO releases a very famous index. Can you please tell me the name of that index? और मैंने इस क्लास में बताया है, ये वाली क्लास में, ये वाली क्लास है ना, important indices वाली क्लास है, this one. In this class, I had discussed also, I still remember. कोई बता सकता है anyone? World Intellectual Property Organization.
releases a very famous index, and that is called as GII, Global Innovation Index. Yes, yes, Lavina, you are right. It's called as Global Innovation Index, which is released by WIPO. ठीक है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज है ना, इसीलिए. अच्छा, आई होप यू आर अवेयर देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज आईपीआर. आप समझते हो? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसको कहते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? कैन एनीवन एक्सप्लेन? सो जीआई टैग इज वन एग्जांपल ऑफ आईपीआर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होता है? एनीवन? So the examples of IPR actually includes, like we have GI is one example of it. Then we have copyright. Then we have, let's say, trademark. ठीक है, ठीक है. हाँ, patent. Yes, Nandini, very good. Patent. Okay. So these all are examples of IPR, intellectual property rights. So GI भी global geographical indication जो है, that also is a part of IPR. तो IPR एक umbrella term समझ सकते हो. It can be considered as an umbrella term which includes all those stuffs. It's an umbrella term. ठीक है, जिसमें सब आता है, काफी सब. So that is what you should be knowing it. Okay, let's move on to the next question. Please read the question and then answer me. Yes, Aditya Verma, very good. Perfectly, you have answered. Legal protection given to creators and inventors. Very good. Fantastic. Now, here's the next question, which is related with the GI, geographical indication. So basically, I'm asking what is X here. So find in the passage where is X written. So a GI, geographical indication, is a name or a sign used on certain products which corresponds to a specific geographical location or origin. India, as a member of DASH, enacted Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act in 1999. So this law was passed. ठीक है, इसके बाद, and it came into effect in September 2003, and after that we started giving GI tags. ठीक है, तो इंडिया क्यों ऐसा किया? बिकॉज इंडिया एक्चुअली इज अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुपिंग, इंटरनेशनल ग्रुपिंग, बिकॉज ऑफ विच इंडिया हैज टेकन दिस डिसीजन टू प्रोटेक्ट द जीआई टैग्स इन इंडिया. यस, यस, नंदिनी, लावीना, प्रीतम, यू आर राइट. इट एक्चुअली इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना. मैंने WTO के बारे में बताया भी. आई हैव डिस्कस्ड इट in my paid sessions in detail about WTO, that WTO is an organization to establish the idea of free and fair trade. That is what you should be knowing it. ठीक है, X is WTO. Okay, yes, you should be knowing it. Now let's move on to the next question. The next question says, which are the following agreements of WTO deals with geographical indication? तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कौन सा अग्रीमेंट जीआई से रिलेटेड डील करता है? जीआई से WTO, लेट मी राइट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. Yes, the right answer is option B. Yes, Nandini, Devanshi Taneja, Lavina, Aditya Verma, Preetam Kundu, Gauravi Bhutada, you all are right. B is the right answer. Agreement on trade related aspects of intellectual property rights. B is the right answer to this question. Okay, that is what you should be knowing about it. तो अगर आप विकिपीडिया पढ़ोगे, इसमें साफ लिखा हुआ, GIs have been defined under Article 22 of Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. और मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था कि थोड़ा सा कॉमन सेंस सिखाते तो आप कर देते आंसर. मैंने अभी बताया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक एग्जांपल जीआई भी. आई हैव जस्ट टोल्ड यू, है ना. सो ऑफ कोर्स फ्रॉम दैट लॉजिक आल्सो द राइट आंसर वुड बी बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Since we are talking about TRIPS, let's learn agreement on trade related aspects of IPR, intellectual property rights. TRIPS agreement kab, which it came into effect on which year, on which date? What is the right answer? There's a request, guys. Everyone, please press the like button and subscribe to the channel. अच्छा, कल से tomorrow is Monday, so from Monday onwards, Monday to Thursday,
6 p.m. we'll be having starting a revision series as requested by you all, है ना? Current affairs revision, ठीक है, of the last 7-8 months. So we'll be doing all those current affairs revision of the last 7-8 months. ठीक है. So uh, you should join it from tomorrow. It's better if you join live because I'll be asking questions, तो आपका एक तरह का quiz type हो जाएगा. So that's better, है ना? Okay, the right answer is 1st January 1995 is the right answer to this question. This is the date on which WTO was established, also 1st January 1995, and that is why we have a TRIPS agreement on 1st January 1995 implemented here. And अगर आप पढ़ोगे, if you read their website, it is talking about copyright related things, trademark, geographical indicators, industrial design, patents, layouts of integrated circuit. तो जो integrated circuit का layout होता है उसका भी एक तरह का copyright होता है. That cannot be copied by one company to the other. ठीक है. So ये सब जो trade secrets ये सब ना, these all are protected under copyrights and all. So the right answer is B. है ना? तो आप देख सकते हो the green countries WTO members where the TRIPS agreement applies. तो अब देखोगे India is also a member of it. मतलब you can say 70-80% countries are member of it, है ना? Okay, that is what you should be knowing about. Okay, let's move on to the next one. Where is the headquarter of WTO? Since we are talking about WTO, तो थोड़ा सा हम लोग WTO के बारे में जान लेंगे. Sorry, we will discuss a little bit about WTO and then after we'll go and deep dive in detail about GIs, geographical indications. And it is in which country also, please tell me. WTO is headquartered where? Yes, Nandini, Pritam, Gorvi, you all right? It's actually Geneva, which is, you will find it in Switzerland. So B is the right answer to this question. ठीक है ना? Switzerland में first. So here is India. This is Europe. And this is Switzerland. And in the west of Switzerland, you will find a country called as a city called as Geneva. Yes, very good. Okay, now let's move on to the next question. The next question is WTO was established in dash and succeeded the dash. Please tell me. I have taught this in paid classes. मैंने पूरा Bretton Woods conference बताया है. Those who are my paid batch student, I am sure you must be aware of this. Bretton Woods conference and all. Yes, very good. Lavina and Nandini, very good. WTO was established on 1st January 1995. ये तो मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था. And it was thus it succeeded the organization called as GATT, General Agreement on Trade and Tariff. Yes, Nandini, very good. General Agreement on Trade and Tariff. Good. तो मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूँ. प्लीज गो एंड रीड अबाउट ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट ऑल्सो. ठीक है, थोड़ा सा पढ़िएगा. Okay. So WTO is an intergovernmental organization headquartered in Geneva, Switzerland. ठीक है ना? And established on 1st January 1995, headquartered Geneva. ठीक है, 166 members are there and all. ठीक है. Now let's talk about the next one. Since we are talking about WTO, तो थोड़ा सा इसको भी discuss कर लेते हैं. Who is the Director General of WTO? Then after this we will discuss the recent GI tags winner or recent products that have been added in the GI tag in India. उसको भी मैं discuss करूंगा because I think वो important होता है. Especially last 6-7 months का तो और ज़्यादा important है. So we'll discuss all those in detail. Yes, Ngozi Okonjo-Iweala. She's from which country? कोई बता सकता है? Yes, Lavina, Nandini, Gauravi, Devanshi, you are right. A is the right answer. Ngozi Okonjo-Iweala. ठीक है, ये जो ये यूनेस्को की हैं, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है. एंड थर्ड वन इज आई थिंक यूनिसेफ के डायरेक्टर जनरल है. एंड ये जो है ना, ये CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वर्ल्ड बैंक की ना. ओके, सो द राइट आंसर इज A एंड शी इज एक्चुअली फ्रॉम नाइजीरिया. सो Ngozi Okonjo-Iweala
is the WTO Director General, and she is actually from Nigeria. Yes, African country. Yes, Lavina Nandri, you're right. African country, Nigeria. है ना? Okay. Nigerian economist है, serving as Director General of WTO. And she has studied from Harvard, MIT, and all. Now, let's talk about India. Let's talk about the GI tax in India and the recent winners. So, the first question related with that is, which of the following ministry in India deals with GI tax? कौन सी मिनिस्ट्री इंडिया में जीआई टैक्स देती है, ये जीआई टैक्स से रिलेटेड सारी चीज डील करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. Yes, Lavina, Nandini, Aarti, Devangan, Zorojura, Devanshi, all are right. The right answer is B, Ministry of Commerce and Industry is the right answer to this question. Yes, Gauravi, Butada, you all are right. Okay, तो ये है एग्जैक्टली मैं ऑफिस का नाम बताता हूँ. ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. सो और डिपार्टमेंट ये है DPIIT, बहुत फेमस डिपार्टमेंट, आपने नाम सुना होगा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. इट्स अ वेरी फेमस डिपार्टमेंट अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री. सो द राइट आंसर इज B is the right answer to this question. ठीक है. Yes, Aditya Verma, you are also right. Aarti, you all were right. Very good. Okay, let's move on to the next question. And in this question, I have not given the options because I believe that this is the easiest one, easiest question of the day. Which is the first Indian product to get GI tag in India? मैंने बताया जो GI Act है वो 2003 में इन्फोर्स हुआ था ना, उसके बाद 2004 से दिया जाने लगा अराउंड. So yes, Darjeeling tea. Yes, Nandini, Preetham, Zorojura, Lavina, you all were right. Can you please tell me that Darjeeling is located in which state of India? Darjeeling tea is important. So it means, इसका मतलब क्या हुआ? Means there is a specific type of tea leaves which originated from the Darjeeling region and it's now maybe spread in the entire world. So to recognize that okay, the original place of this is the Darjeeling. That is why actually they have called it as Darjeeling tea has been given GI tag. Yes, it is not Assam, it is West Bengal. Yes, Devanshi, Lavina, Nandini, you all right, Gauravi. The right answer is West Bengal. Okay. Assam is also famous for tea leaves, but Darjeeling is actually in the West Bengal. Okay. तो आप देख सकते हो, first to get was Darjeeling tea and agriculture sector में West Bengal 2004-5 year में. ठीक है. So first वाला याद रखना और recent ones याद रखना. जैसे currently we are having total 643 GI tags. Currently मतलब आज के दिन बता रहा हूँ मैं. ठीक है. So this is what you should be knowing about it. Let me show where exactly it is. तो ये this is the state of West Bengal. I hope you can see. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, this region, ये सिक्किम है, ये वेस्ट बंगाल है. तो यहाँ पर somewhere here you will find Darjeeling. And the nearest railway station is New Jalpaiguri. आपने नाम सुना होगा. इसी के पास में you will find Siliguri also. So the nearest railway station is called as New Jalpaiguri. New Jalpaiguri railway station. ठीक है. Okay, now let's move on to the next one. Now we are talking about the recent products that have been given GI tags. Please read it. I would say this is very, very important and a star market. You won't believe, but a foreign country has filed for a GI tag in India. And that foreign company is Embassy of Japan. It is an alcoholic beverage of Japan which wants a GI tag in India also. They applied for GI tag out, I think, almost 2 years back in 2022. And actually, they applied in a Chennai office in Geographical Indication Registry, which is headquarter office in Chennai. And recently, they have got the GI tag also. So I'm asking, कि which alcoholic beverage is being talked about? Alcoholic beverage समझ सकते हो ना, मतलब एक तरह की पीने की अल्कोहल टाइप का पीने का ड्रिंक होता है. What is the right answer? I'm waiting for the response.
from everyone whosoever is watching. So I have got one right answer. Nandini is right. Nihonshu उसको कहते हैं. Very good. Nihonshu. So this is the GI tag uh, winner recently. देखो, what is Nihonshu and why is Japan seeking a GI tag? ये पुरानी है, 2 साल पहले की न्यूज है, because it had applied for it and now it has got the GI tag Nihonshu. ठीक है. और इसके लिए अगर आप चाहो तो इसके बारे में अगर वाई कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर रीजन क्या, क्यों अप्लाई किया था, तो आप इस आर्टिकल को जाके पढ़ सकते हो. जस्ट यू सर्च दिस ऑन गूगल, यू विल गेट दिस व्हाट इज निहोंशु एंड व्हाई इज जापान सीकिंग ए जीआई टैग, और द हिंदू लिख के सर्च करना, यू विल गेट इट. रीड द रीजंस व्हाई दे हैव बीन आस्किंग फॉर. ठीक है. खैर, यस आदित्य वर्मा, यू आर आल्सो राइट. निहोंशु इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. मैन्युफैक्चरर इज जापान. Now the next is Pilkhuva hand block print textile has been given GI tag. ये होता क्या है, कपड़ा पर, क्लोथ पर एक तरह की प्रिंटिंग होती है, खास किस्म की प्रिंटिंग ऑन क्लोथ होता है ना. ये सब रीसेंट वाला बता रहा हूँ, रीसेंट 5-6 मंथ्स के अंदर में जिनको दिया गया, द इंपॉर्टेंट वंस. ओके, so I'm telling you because these are the recent ones. The chances are high they'll be asking, because otherwise 600 plus है, सब तो पूछेंगे नहीं, फर्स्ट पूछेंगे, उसके बाद जो recent winners है. Yes, Nandini is right. Satviki Goswami and Tanishka Sharma is right. Very good. Actually, Pilkuva एक जगह है उत्तर प्रदेश में. So D is the right answer to this question. Hand block print textile होता है. टेक्सटाइल ने कपड़े पे प्रिंटिंग होता है खास किस्म का, and that is why it has won the GI tag recently. So D is the right answer to this question. Yes, Devanshi, Gauravi, you all were right. Now let's move on to the next one. The next is Banaras metal casting craft has been given GI tag. Metal casting craft ऐसा होता है, ऐसा कुछ है ना. जैसे मैंने नाबार्ड की वेबसाइट से निकाला हूँ, ये आपने देखा होगा इस तरह का बर्तन, कॉपर वगैरह का या मेटल का, उस पर बहुत सारे देखो डिजाइनिंग किया हुआ, गौर से देखो, if you see it carefully, है ना. So these are special type of designing done. तो of course देखो, ये अगर आपको नहीं भी पता होगा तो भी एग्जाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, because here it is clearly written Banaras. Banaras कहाँ है? In which state you will find? Yes, Lavina, Aditya Verma, Zojura. Banaras is actually in Uttar Pradesh, not in Bihar. It's in East UP. D is the right answer to this question. ठीक है, याद रखिएगा. और बनारस के लिए जैसे पान बहुत फेमस है, there's a song on it also, है ना. तो and Banaras is the place from where a very famous personality is the member of parliament. Who is the MP, Lok Sabha MP from Banaras? Please tell me. मतलब बनारस आप लोगों को पता होना चाहिए. It is not in Bihar, it is in Uttar Pradesh. Yes. Yes, एकदम ईस्ट यूपी में है, मतलब नियर टू द बॉर्डर ऑफ बिहार इट इज ट्रू, बट इट इज इन बनारस, और व्हाट वी कॉल इट एज वाराणसी. ईस्ट यूपी में पड़ेगा. यस, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. पीएम मोदी इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम दिस बनारस लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, है ना. सो ये तो एकदम पता होना चाहिए. गया इज इन बिहार, राइट सात्विकी, यू आर राइट. गया, अच्छा, आई गॉट इट. आप शायद गौतम बुद्धा की लाइफ से कंफ्यूज करो क्या. सो गया, बोध गया इज द प्लेस वेयर गौतम बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट. ही गेव हिज फर्स्ट स्पीच एट बनारस व्हिच इज नाउ इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. ओके, बी केयरफुल, दीज आर इंपॉर्टेंट वंस. डी इज द राइट आंसर. देन बरेली केन एंड बम्बू क्राफ्ट हैज बीन रिसेंटली गिवन जीआई टैग. तो मैंने आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए इमेज बनाया है. केन एंड बम्बू क्राफ्ट अगर आपने देखा होगा, जिसको हम लोग, आई डोंट नो इंग्लिश में क्या कहते हैं, बट हिंदी में हम लोग उसको बेत की कुर्सी कहते हैं. इन इंग्लिश दे आर कॉलिंग इट एज केन एंड बम्बू क्राफ्ट. वो जो बम्बू से काट के जो है ना, वो ये बनता है, आई वुड से हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह या सोफा वगैरह ही बनाते. बेत की कुर्सी कहते हैं, वी कॉल इट एज. एंड बरेली, यू शुड नो इट. द राइट आंसर इज सी, उत्तर प्रदेश. यस, नंदिनी, तनिष्का, सतविकी, लवीना, आदित्य वर्मा, यू आर राइट, है ना. बरेली पर there's a very famous old song of Bollywood also based on this city, है ना. बरेली तो फेमस जगह है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये. C is the right answer. ठीक है. Let's move on to the next one. Tharo embroidery work has been given GI tag which belongs to तेलंगाना, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश. एम्ब्रॉयडरी समझते हो? एम्ब्रॉयडरी को हम लोग जरी कहते हैं एक्चुअली. जरी का काम होता है कपड़े में
डिजाइनिंग होती है, ठीक है, स्पेशली फीमेल क्लोथिंग में होता है, आई थिंक साड़ी वगैरह में डिजाइनिंग होती है, आई थिंक कुर्ता वगैरह में भी होता है. इट्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजाइनिंग डन ऑन क्लोथिंग, दैट्स कॉल्ड एज zari in Urdu, in the local language, and embroidery in English language. Tharu embroidery work. Tharu is a community, you will find it in the state of Uttar Pradesh. C is the right answer. Yes, Nandini, Satviki, Gauravi, Adit. हाँ, टेक्सटाइल आर्ट वर्क. यस, आदित्य वर्मा. थारो एम्ब्रॉयडरी वर्क कहते हैं. आपने ऐसा देखा होगा कपड़े पर एक से एक डिजाइनिंग होती है, बल्कि और है ना. सो different types of designing that is done. ठीक है, थारू कम्युनिटी, यू विल फाइंड इट इन तराई रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो इसको जरी भी कहते हैं, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी और जरी, है ना. यस, इज द राइट आंसर. हाँ, देखो एक और है, बरेली जरी जरदोजी. इसको भी जीआई टैग मिला. देखो मैंने बताया जरी, देखो ऐसा होता है क्लॉथ में. कपड़े पर एक से एक डिजाइनिंग होती है, फीमेल क्लॉथ पर खास के होता है, ठीक है, साड़ी वगैरह में, लहंगा में. और देखो आई हैव टेकन इट फ्रॉम दिस ओटीओपी. आप जानते हो एक स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम. दिस इज अ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टू प्रोमोट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वन इम्पॉर्टेंट स्किल, ठीक है. तो ऑफ कोर्स बरेली उत्तर प्रदेश में अभी मैंने बताया. सो सी इज द राइट आंसर. ये सब पता होना चाहिए बिकॉज दीज आर द रीसेंट 6-7 विनर्स, 6-7 GI tags being given, ठीक है. तो आपने देखा होगा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दीज टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी और जरी, ठीक है. जरी मतलब वही एम्ब्रॉयडरी हो गया, ठीक है. सी इज द राइट आंसर. नाउ तिरंगी बर्फी, बनारस तिरंगी बर्फी ऐसा होता है, ठीक है. तिरंगी बर्फी मतलब बर्फी इज एक्चुअली अ स्वीट, है ना. इट्स प्रोमिनेंट इन नॉर्थ इंडिया. एंड तिरंगा मीन्स 3 colors. Basically, they are referring to the Indian flag color, orange, white, green, or saffron, white, green. And I have told you Banaras. I have just told you, so I'm expecting you all to answer it correctly. ऐसे रिवर्स भी पूछ सकते हैं कि which of the following has not been given GI tag in India recently. और 4 ऑप्शन दे देंगे, one of them will not be the case. तो वो भी आपको पता होना चाहिए, रिसेंट विनर्स पता होना चाहिए, ठीक है. सो द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश. बनारस तिरंगी बर्फी इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश. तो मैं दिखा देता हूँ, यूपी इज फेमस. तो ओके, दिस इज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. एंड बनारस यहाँ पर एकदम पड़ेगा, एकदम बनारस और वाराणसी, या थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा. हाँ, इसके बगल में एक बहुत फेमस रेलवे स्टेशन है ना. Just near to Banaras, you will find a very famous railway station called as Pandit Deen Dayal Upadhyay Junction. Earlier, it was called as Mughal Sarai Station, and this is the largest railway station of North India, the most busiest railway station in North India, you can say. Khair. So now let's talk about another one recently been given, Kutch Ajrak. और ये एक तरह की, ये भी क्लोथिंग पर ही होता है. देखो एक मैंने फोटो भी लिखा है, आई थिंक एक सॉर्ट ऑफ प्रिंटिंग है जो सॉरी क्लोथ पर होता है. एंड दिस हैज बीन गिवन रिसेंटली द जीआई टैग, एंड इट इज फ्रॉम वेयर. यस, तनिष्का, लवीना, गौरवी, नंदिनी, आदित्य, जोरा, यू ऑल राइट. देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस से बताओ, कच्छ जो है इट्स अ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, ठीक है. सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. हो सकता है वो कच्छ नहीं लिखे, मैंने आपको हिंट के लिए दे दिया, वो ऐसे बस लिख देंगे. अजरक हैज बीन गिवन रिसेंटली जीआई टैग, और ये 4 ऑप्शन दे देंगे. देन यू हैव टू बी केयरफुल. यहाँ तो मैंने आसानी के लिए आपको दे दिया, बट यू शुड नो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. अजरक इज सॉर्ट ऑफ अ क्लोथिंग, प्रिंटिंग ऑन द क्लोथ्स, यू कैन से, ठीक है. तो अब मैं आपको फाइनली दिखा देता हूं जो मैंने अभी तक डिस्कशन किया. ओके, तो अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक का इसमें डेटा है. तो अभी तो मार्च 2025 नहीं आया, बट कहने का मतलब है कि इसके बाद से लेकर अभी तक है. सो दीज आर द रीसेंट विनर्स व्हिच आई हैव हाइलाइटेड टिल नाउ, और ये जरूर पढ़ लीजिएगा बिकॉज दे कैन आस्क इट, ठीक है. एक गुजरात से, बाकी रेस्ट यूपी से, एंड जापान से एक है, निहोनशु. मेरे ख्याल से अगर पूछेंगे तो ये चांस है, बिकॉज यूनिक चीज पूछते हैं जनरली. जैसे बरेली ये सब दे देंगे तो लोग पहचान लेंगे ना कि बरेली कहाँ है, बनारस कहाँ है, ठीक है. सो मोस्ट लाइकली दे विल बी गिविंग अबाउट निहोनशु, आई गेस, ठीक है. ये पूछ देंगे निहोनशु कहाँ का है, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान और समथिंग लाइक दैट. सो बी केयरफुल, वी आर टॉकिंग अबाउट जापान. ओके, सो ये पता होना चाहिए. इसके अलावा भी कुछ है, चूंकि जनरली करंट अफेयर्स मतलब होता है 1 ईयर्स का कवर करना, तो मैं थोड़ा सा जो लास्ट के पहले का भी है वो कुछ इंपॉर्टेंट वंस मैंने आपके सामने रख दिया है. मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ.
इंपॉर्टेंट फेमस, जैसे भरोच सुजानी वीविंग, भरोच इज अ प्लेस इन गुजरात, तो ये आप पहचान लोगे। बाकी मेघालय का तीनों तो पूछेंगे नहीं बिकॉज नाम में ही है मेंशन्ड है, ठीक है। देन त्रिपुरा ये हो गया, सूर्य मध्य प्रदेश। बनारस म्यूरल पेंटिंग्स, म्यूरल पेंटिंग बहुत फेमस होता है, ठीक है। तो ये पूछ देंगे कि कहाँ कौन से स्टेट को मिला, और बनारस हटा देंगे, दे विल रिमूव इट, सो लाइक दैट। म्यूरल पेंटिंग्स आर वेरी फेमस, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बिहू डोल, बिहू जहां पर भी आए ना वो आसाम से याद रखना, आसाम देयर इज अ फेस्टिवल कॉल्ड एज बिहू आल्सो, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन एक और है बनारस ठंडाई, ये काफी फेमस हुआ था एक टाइम पर, वो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ ड्रिंक, ठंडाई में तो कोल्ड ड्रिंक टाइप समथिंग होता है, ठीक है, विच इज फेमस इन प्रोमिनेंट इन बनारस रीजन एंड ऑल, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। और गुजरात सोफ एम्ब्रॉयडरी, ये तो गुजरात लिखा है तो नहीं हो सकता पूछे, बट द इंपॉर्टेंट मंथ्स आई हैव हाईलाइटेड फॉर यू, द रीसेंट विनर्स, है ना। ईरी सिल्क ये पूछते हैं आसाम में, कई बार मैंने कई सारे एग्जाम में देखा, आई डोंट नो व्हाई, आई हैव सीन इन मेनी एग्जाम्स बीइंग आस्क्ड। बोडो ईरी सिल्क, बोडो एक्चुअली इज ना, बोडो लैंड इज आसाम रीजन एंड ऑल, सो ईरी सिल्क इज क्वाइट प्रोमिनेंट इन आसाम, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट रीसेंट विनर्स है मैं आपके स्क्रीन पर आपके सामने लगा दिया हूँ। चित्रकूट वुडन क्राफ्ट, चित्रकूट इज अ प्लेस इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। बनास की शहनाई है ना, हैंडीक्राफ्ट होता है, दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस, okay. So these are the important prominent ones I have discussed. Now there's a homework for you. The homework is this: name the conference which led to the establishment of World Bank. After the class is over, you are supposed to answer it in the comment section. Class over होने के बाद नीचे comment section में आंसर करना आपको, ठीक है, ये लिखना है। तो A1 हो गया, दूसरा A2 ये है प्रीकर्सर ऑफ WTO, और 3 मीनिंग ऑफ ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट एक्सप्लेन करना है 1 लाइन में सिर्फ, ठीक है। आफ्टर द क्लास इज ओवर यू आर प्रोवाइडेड अ रिकॉर्डेड वीडियो वेयर यू आर सपोज्ड टू आंसर। तीसरा चीज ये, टुमारो से मंडे से विल बी हैविंग, मंडे टू थर्सडे वी आर हैविंग a revision series, current affairs revision series that would be very 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 important for the upcoming exam, चाहे CLAT, ALET या any other exams you are attempting, that would be very very important. So do join me from tomorrow 6 PM. better to join live, इसलिए जाए live better होगा कि it will help you and have a practice also, ठीक है, तो ज्यादा थोड़ा सा अच्छा have a competitive atmosphere थोड़ा ज्यादा होता है live में, तो that's better. So this is all about today's class. अच्छा एक चीज और है, today at 8 PM we'll be having a session, static GK की जो सेक्शन होती है वो होगी आज, ठीक है। So do join me at 8 PM today. Yes नंदनी, देखो मैंने recent ones आपके सामने लगा दिया हूँ, जो कि आप पूछ रहे हो ना कि बोडो टैक्स, देखो यहाँ पे, ठीक है, जो जी बोडो को मिले, बट सारा याद रखना इज नॉट पॉसिबल। सो इंपॉर्टेंट वंस जैसे मैंने एरिया सेल के, अगर आप चाहो तो पूरा याद कर लो, बट आई नो इट्स डिफिकल्ट दैट यू शुड रिमेंबर ईच एंड एवरी वन, तो इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट वंस है आपके सामने स्क्रीन पे खुद ही शो कर दिया था। व्हाट आई हैव ऑलरेडी शोन, द रीसेंट वंस आर देयर, अदरवाइज अगर आप जाओगे उनकी वेबसाइट पे सारे पढ़ना शुरू करोगे, इट वोंट बी पॉसिबल, ठीक है। स्पेशली जो लास्ट का मैंने ये बताया ना, ये 6 ये वाला, इसमें से ज्यादा चांस है पूछे जाने के, जो अप्रैल 2024 से लेकर अभी तक का है, so there is high likelihood, ठीक है। So this is all about today's class. Please subscribe to the channel, press the like button, share this video. Now I'll be meeting you today at 8 PM. Thanks for watching.